Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And you are attending the Wednesday meet, our weekly Wednesday meet. And I welcome all the participants and all the guests today. In the last two sessions, we have been seeing and discussing on Buddha's teaching. And today, the agenda is Gyan, path of wisdom. In the last two sessions, we saw how the world is full of suffering. And we saw the differentiation between pain and suffering. And we also saw what is the main root cause of the suffering. तो कौन बोलना चाहेंगे? पिछले दो सेशन के लर्निंग क्या थे? थोड़ा सा फास्ट रिकैप कर लेते हैं and then we move on with the wisdom for today. Yes. So what have we learned in the last two sessions? How many of you could see suffering of your life? Because unless you see suffering in your life, it will be all theoretical. आपको अपनी लाइफ में सफरिंग दिखनी चाहिए, बेशक अभी हो या पहले की हो, और उसकी वजह क्या है ये दिख जाना चाहिए, और फिर कैसे आपने उसको पार किया अगर कर लिया है, then you should also know that there is only one way to end your suffering and misery when you stop blaming the world outside. क्योंकि बाहर की दुनिया में सफरिंग और मिजरी नहीं है, आपके अंदर की दुनिया में सफरिंग और मिजरी है. तो जब हम पेन और सफरिंग को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और उसके बाद सफरिंग को छोड़ देते हैं, then we can do something about you can say our life. हमारी लाइफ को हम सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं. So anybody who wants to share on these lines? Last two sessions से क्या मिला आपको? What is the learning that you took up and how it has impacted your life? Yes. Anyone? You can just simply unmute yourself and share what is opening up. और जो लोग जिन्होंने अटेंड नहीं किया उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी होगी. How many of you have seen the recording? And how many of you have done both the things? हाँ, सेशन भी अटेंड किया, रिकॉर्डिंग भी देखा. Yeah, so they're good. So they are the real seekers. So you should inquire into your life, see the recording again, make your notes. That would be really good with the date on it so that you know 2 years later when you see that, oh, 2 साल पहले मेरी ये state था. That is how you see your growth, right? Yes. तो कौन बोलना चाहेंगे? What have you picked up from the last two sessions? Very simple. एक line में बोल सकते हो. I don't want any description. What did you pick up? Yes, Parinam, go ahead. So I will repeat again the golden mantra that we had been talking about in the last two sessions that has stuck with me. So that suffering is equal to pain into resistance, which means that the more you resist and whatever you resist, that will persist. So basically the idea is that, how you cannot do anything about the pain if it's karmic, but you can do something about the suffering because that's what you bring upon yourself. So basically, that's the main learning. And the other thing that has stuck with me is basically the idea of letting go. Like, there are small things, small irritants in daily life. And I don't know how that, past few days, and I think this is the effect of these sessions itself, that there is an inner voice that comes quite frequently to say that let go. Is it important? Is it going to matter? Why bring upon another suffering on yourself? This doesn't require that kind of importance from you, so don't give it undue importance. So I think these are the two things that have stuck with me for the last two sessions that we fantastic absolutely great, wonderful. Just acknowledge Parinaji. That is in fact the gist of what all we have discussed, not only in the last two sessions but many sessions that we have been talking on. That is the main idea behind it, right? Wonderful. Anybody else who wants to share your experience? So it could be the same learning, but your life is your life and your learning is your learning. When you say that, it becomes more profound in your awareness. Yes. कौन बोलना चाहेंगे? Shashi, rather, can I ask that anyone who would like to share what they have really experienced from this knowledge in their life? What's Exactly. your experience? That's more important. Okay, perfect. So whichever way, whatever is you want to share, what do you pick up? How did it impact your life? What is the wisdom?
Okay, so people I'll are in share the one. I'll yes, share one. yes, Sanjeev. So while everything we have been doing in our life and learning and coaching also, so there was this person in my life. There is this person in my life. When I see his message, I feel like I should not open this message. I should not respond to this message. And I've been doing it regularly with this person, irrespective of many other person I've overcome. But this week I thought when I saw the message popped up on the screen, I said, why? Why am I resisting it? And then again, this same formula, S is equal to P into I. And that is where I thought, let me open the message and let me respond to him. And genuinely, when I opened the message was again the same irritating message which I was expecting. But I responded in a very cool, simple, calm manner. और जैसे हम किसी को अच्छी तरह से प्यार से बताते हैं उसी तरीके से मैंने करा. 2 मैसेज एक्सचेंज हुए. 3rd मैसेज में आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड. This is what I would say. I took one next step for my life in this journey of total Buddha's teaching. Thank you very much. Very good, Sanjeev. All right. So it might look like, not a very great breakthrough result, but the most important thing is that the irritation is not outside, it is inside. ये पता लगा, and when Sanjeev realized this, that was the solution. वरना उसकी पोस्ट इरिटेटिंग है, वो इरिटेटिंग है, बाहर जा रहा है, सारा ध्यान बाहर जा रहा है. If you say that if that post is triggering some irritation in me, then the problem is not outside, problem is inside. I am having this vikar of irritation in me. And that is the beauty of that introspection. Very good, Sanjeev. Very well brought out. And that is how we have to actually do the स्वाध्याय. बाहर की दुनिया perfect है. पूरा ब्रह्मांड perfect है. God की creation है. वो उसमें कुछ गड़बड़ है ही नहीं. So if you are seeing some imperfection in the outside world, guess what? It is a manifestation of the imperfection inside you. So look inside. And that is what Buddha's teaching is always telling you. Take up any thread of Buddha's teaching. The bottom line is, बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है आपके अंदर है. Correct? Very good, Sanjeev. Let's acknowledge Sanjeev and Parina ji for sharing. Yes, anybody else? Something opening up? You want to share something, ask something? Please go ahead. Okay, so we have done the recap. I will move on with the session and the wisdom for today. The agenda for today, Gyan, the path of wisdom. Now the whole context of Buddha's teaching was, अगर हमारी लाइफ में सफरिंग है, और सबकी लाइफ में सफरिंग, बिकॉज बाहर उसमें सिर्फ सफरिंग ही देखा था. So the path to relieve people of relieve humanity of the suffering, that was his quest. And when he looked into the reason, he found that attachment, rag dvesh, that is what he says. Rag dvesh or attachment is the root cause of all the suffering. And that is coming from ignorance. तो अगर प्रॉब्लम पूरी की पूरी इग्नोरेंस में है, वी डोंट नो आवर रियल नेचर, हमको मालूम ही नहीं है हम कौन है. सो इफ इग्नोरेंस इज द रियल नेचर, व्हाट विल बी द आंसर? अगर इग्नोरेंस हो, इफ इग्नोरेंस इज कॉजिंग यू प्रॉब्लम इन लाइफ, what will be the solution? Wisdom, right? The relevant wisdom will remove that ignorance. So his whole path was devoted to the path of wisdom. That is why Gyan was the only path that he said will relieve you of your suffering and miseries in life. Right? Now it is very easy to say that in one line. कि suffering का root cause ignorance है. So get the wisdom and you are through. You're through with all the suffering and miseries in life. It can take lifetimes to actually get that wisdom in your system, right? And by the way, let me give you a bit of a background of what was happening in Buddha's life that time. He was a prince, and even when he had not gone on to the journey, वो राजमहल में पले हैं, प्रिंस है, हाँ, जैसे म्यान में तलवार होती है हमेशा, like that. He was a warrior, and he was supposed to be the emperor kind of a warrior. उसकी पूरी ट्रेनिंग हो रही थी, he should become an emperor. His father was coaching him or forcing him to get into that mold.
And when he started this journey, and he was strictly against जीव हत्या. वो शुरू से उसका नेचर ही ऐसा था. बचपन में भी एक चिड़िया को एक एरो लग जाता है, he saves and he fights to keep that pigeon with him. तो शुरू से जीव हत्या के टोटली अगेंस्ट थे. ऑब्वियसली ही कैनॉट बी क्षत्रिय और वॉरियर कैसे बनेंगे वो. ही डजंट बिलीव इन किलिंग एनीवन. करेक्ट. एंड उस बात से जब वो जा रहे हैं एंड वो बोल रहे हैं कि बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं है. करेक्ट. तो ही वॉज अगेंस्ट द रिचुअल्स. बलि देना, भगवान के लिए बलि दे के भगवान को प्रसन्न करना. कहते किसको प्रसन्न कर रहे हो? किसी की बलि देने से कौन प्रसन्न हो सकता है? और भगवान को मैंने देखा नहीं है. देयर इज नो एक्सपीरियंस ऑफ गॉड फॉर मी. एक्चुअली बुद्धिज्म डजंट टॉक ऑफ गॉड, डजंट टॉक ऑफ सोल. दे ओनली टॉक ऑफ कर्म. क्योंकि बाहर की दुनिया में हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म ही पूरा का पूरा फाउंडेशन है बुद्धा's टीचिंग. यस. सो ही सेज ही वाज अगेंस्ट द रिचुअल्स. ही सेज कोई जरूरत नहीं है. He was against the whole Brahmin community was against him. ये क्या बोल दिया, right? He was against hinsa. So the whole Raja Maharaja kingdom सारे उसके against. So you have to understand there was a lot of opposition that he faced. It was not an easy path for him, right? And even his own community. पहले क्या था? तपस्या करो, शरीर को सुखा दो, बिल्कुल शरीर की तरफ ध्यान ही मत दो. खाने पिया नहीं, सोए नहीं, ध्यान में लगे हुए हैं. He says even that is not required, because he did that and he was nearly dead. If you have seen his story, he was nearly dead. Then he realized this is not the path. For God realization, I have to, not God realization, for realizing the ultimate truth, I need to keep the body alive. So he used to take care of the body then. Self-preservation was important. तो उन्होंने पहले वो खीर भी खाते थे, फल भी खाते थे. उसके बाद जब सही समझ में आ गई कि बॉडी को सही रखना जरूरी है. एंड हिज होल कम्युनिटी जैसे ये क्या कर रहा है, ये तो खीर खाने लग गया है, ये तो पकवान खा रहा है ना, फल खा रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल. सो हिज कम्युनिटी वाज अगेंस्ट हिम. हिज कम्युनिटी मींस जो सेजेस का जो ग्रुप था उनका. तो उसके साधक उनके साथ नहीं थे. एंड ही वाज एक्चुअली एज एन इंडिविजुअल ही स्टार्टेड हिज जर्नी. एंड देन व्हेन ही got that realization, he wanted to share that with people, and nobody was willing to listen to him first. You have seen the whole story, and slowly people started knowing the value of what he was saying, because his face showed the divinity that he had got. And that peace which was settled in him, he shared that with people, and then people started following him. So his path of Gyan was very, very tough for people to understand. Get my point? Because if somebody says कि तुमको दान नहीं करना है, दान से कुछ नहीं होगा, तुमको तीर्थ करके कोई फायदा नहीं है, बाहर मत ढूंढो भगवान को, नहीं मिलेंगे, भगवान तो खैर है ही नहीं, he doesn't believe in God. तो कहते बाहर बेकार टाइम वेस्ट करो. Understand, if I'm talking to you that way, during that time, how would you react? People are going to temple, people are going to this, he says not required. पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कहते नहीं जरूरत नहीं है. Get my point? तो ना दान, ना तप, ना तीर्थ, कहते सिर्फ ज्ञान. Only wisdom will give you mukti. That was his teaching. Now that is as far as the Buddha's teaching is concerned. So before I move forward and do more analysis of this knowledge, let me have some sharing. What are you listening to right now? If Buddha was to tell you all these things, how would you react? पूजा बेकार है, तीर्थ स्थान पे जाना बेकार है. बेकार है means understand. It will not give you the freedom from suffering. पूजा पाठ करने से सफरिंग खत्म नहीं होगी. दान दक्षिणा करने से सफरिंग खत्म नहीं होगी. Read it in that context. Not that it is useless. It will not give you the desired result. You will still keep suffering. How many of us go to temples or used to go to temples? Suffering खत्म हुई? नहीं हुई. So हमारा एक्सपीरियंस भी यही बोलता है ना. करेक्ट. दान दक्षिणा करी, बहुत लोगों ने करी होगी. सफरिंग खत्म हुई अपनी? नहीं खत्म हुई. राइट. और मंत्र जाप किए या कुछ और किया, मेडिटेशन किया, रोज 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, गुस्सा बढ़ रहा है. मेडिटेशन करके इरिटेशन हो रही है, मेडिटेशन करके गुस्सा बढ़ रहा है.
मेडिटेशन करके करे ये तो हुआ ही नहीं, प्रमोशन नहीं मिली, पैसे की कमी है, फंड्स फ्लो नहीं है, हाँ, रिश्ते भी अच्छे नहीं है, बीमारी और आ गई, सब बेकार है। सो अंडरस्टैंड योर एक्सपीरियंस ऑल्सो, इफ यू लुक एट इट क्लोजली, आपका एक्सपीरियंस भी यही बोल रहा है कि सफरिंग और मिजरी इससे नहीं जाएगी, राइट? सो लेट्स हैव सम पीपल शेयर, देन वी विल गो टू द क्रक्स ऑफ द विजडम. सो रिमेंबर द वर्ड्स, न दान, न तीर्थ, न तप, इन तीनों से फर्क पड़ेगा, लेकिन लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी. मुक्ति मीन्स सफरिंग फ्रॉम, दुख निवारण नहीं होगा, दैट इज द टेक्निकल लैंग्वेज. दुखों का निवारण नहीं होगा, दुख निवृत्ति नहीं होगी, दैट इज द विजडम. नाउ लेट अस सी आवर एक्सपीरियंस. व्हाट डज आवर एक्सपीरियंस से? लेट्स हैव सम शेयरिंग. हाँ जी निवेदिता जी, आप या तो म्यूट पे हैं या आवाज नहीं है. अब दोबारा से, मेरे को ही नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? हाँ, आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करिए. हाँ हाँ, वापस आइए. ओके ओके, टिल देन एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? परवीन जी, विजय जी, एनीथिंग दैट इज ओपनिंग अप फॉर यू? No, what you have said, Shashi ji, is correct. We have experienced that throughout our life, no? मंदिर, तप, दान हमने किया क्योंकि वो धर्म कहता था कि हम वी वर ब्रॉट अप लाइक दैट कि 10% मतलब कि थोड़ा सा जैसे दान करना ही है, बट इट डिडंट निवारण नहीं हुआ ना, दुख नहीं निवारण हुआ. So if you actually see in depth, this is true. What Buddha was teaching was absolutely true, and people were absolutely against him. They were ready to eliminate him. You can understand that. कि पूरे भिक्षुओं को मार देना चाहिए. And his bhikshus who would go for collecting alms, bhiksham dehi, they were ill treated, they were beaten up, and a lot of things happened. But he braved it through. This is the truth. He knew that, and he followed it. Okay. Yes. So now let us move on. तो सबका एक्सपीरियंस यही है या किसी का एक्सपीरियंस दूसरा है कुछ, कि आपको लगता है कि इन तीनों चीजों से जो हमने अभी बताई, दान से, तीर्थ से और तप से, these are symbols, okay? Don't take it only as a word meaning. When we say दान, we are talking of दान दक्षिणा, जो भी हम डोनेशन, चैरिटी जो कर रहे हैं. इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट लेट अस लुक इनटू दैट, देन वी विल गेट इनटू द फर्दर विजडम ऑफ बुद्धा's teaching. See, when we say the God is within you, सुन लिया, बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, बचपन से सुनते आ रहे हैं. कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा. क्यों नहीं पड़ा? यही तो एक्चुअल आत्मज्ञान है. मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, बचपन से मालूम है हमको, सुना हुआ है, बिल्कुल सुना हुआ है ना? कोई फर्क पड़ा था उस समय? नहीं पड़ा. क्यों नहीं पड़ा? तो ज्ञान योग, सिर्फ ज्ञान योग या ज्ञान मार्ग मान लीजिए, ज्ञान जब मिलता है, जो हाईएस्ट विजडम भी अगर आपको मिल जाता है, वो अंदर जाता नहीं है. क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. नाउ दिस इज नॉट बुद्धा's teaching, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. इफ यू सी ए क्लीन वाटर, एक ऐसा लेक है जो बिल्कुल साफ है, राइट? और उसके अंदर अगर सूरज ऊपर से चमक रहा है तो सूरज की छवि दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी. पानी शांत है, बिल्कुल साफ है, दिखेगा? तो यू आर एक्चुअली, इमेजिन नाउ दैट सन इज लाइक गॉड. तो भगवान का प्रतिबिंब वहां पे आराम से दिख जाएगा. कौन से चित्त में दिखेगा? ये चित्त है. पॉन्ड इज द लेक, इज द चित्त. तो अगर आपका चित्त शांत है और साफ है, दैट मीन्स योर माइंड इज स्टिल एंड क्लियर, then the God reflection will be, God will be reflected in your mind. Then that Brahma Gyan will show the results. But what is the normal situation? Human mind कैसा होता है? पानी गंदा है और बहुत टर्बुलेंट है, मतलब बहुत, उसमें मान लीजिए तूफान आया हुआ है या सुनामी आ रहा है पानी में. अब कैसा होगा पानी? पूरा पानी उछल रहा है,
उबल रहा है और पूरा मड्डी है, आपको उसका तल नहीं दिखाई देगा, उसमें सूरज की छवि भी दिखाई नहीं देगी। तो गॉड कैनॉट बी रिफ्लेक्टेड इन एन इम्प्योर एंड टर्बुलेंट माइंड। तो ज्ञान योग इसलिए समझ में नहीं आता है। तो Buddha's teaching also landed flat on people's life because their mind was full of dirt and turbulent, right? So he had to break his teachings into different paths. So we'll come to that later. But right now let us stick to this example. तो अगर सबसे पहले माइंड को शांत करना है और प्योर करना है, करेक्ट? तो अगर ज्ञान योग समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है? तो ध्यान में बैठना है। तब काम आएगा। अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, यू हैव टू मेडिटेट। ध्यान करो, माइंड सेटल होगा, माइंड सेटल हो जाएगा, एंड देन इट विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट द गॉड्स टीचिंग्स और द विजडम ऑफ द डिवाइन। और ये भी नहीं हो रहा है, माइंड स्टिल नहीं हो रहा है, ध्यान भी नहीं लग रहा है, देन यू हैव टू प्यूरिफाइड। क्यों? मडी है, मड है, इम्प्योर है वो। तो आपको क्या करना है? हार्ट को प्योर करना है। इमोशंस काफ़ी नेगेटिव हैं, तो आपको नीचे आना है। नीचे आना मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ फर्स्ट यू आर एट द थर्ड आई चक्र। व्हेन यू आर मेडिटेटिंग यू आर एट द थर्ड आई चक्र, राइट? तो ध्यान लगेगा थर्ड आई पे। और अगर आप हार्ट चक्र पे आओगे तो इमोशंस को प्योर करना जरूरी है, तब वो मडी वाटर जो है वो क्लियर वाटर होगा। जब वाटर क्लियर हो जाएगा तब वो स्टिल होगा, जब वो स्टिल होगा तब ज्ञान मिलेगा। तो दैट इज वाई यहाँ पे तीर्थ इंपॉर्टेंट है, राइट? So all these have importance, but they come at a different levels. अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो पहले हार्ट को प्योर करो। उसमें राग द्वेष भरा पड़ा है, उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब भरे पड़े हैं। तो माइंड मडी है, टर्बुलेंट है। उसको शांत करने के लिए पहले फिर भक्ति, डिवोशन, सरेंडर ये जरूरी है। अब कोई बोलता है ये भी नहीं हो रहा है, भक्ति भी नहीं हो रही है, पूजा भी नहीं हो रही है, मंदिर भी नहीं जाना है, तीर्थ भी नहीं जाना, मतलब कुछ नहीं करना है, then you have to come down and handle your ego by doing charity. अपने ईगो से बाहर निकलो, अपने मैपन से बाहर निकलो, then comes दान। मेकिंग सेंस? तो दान का अपना सिग्निफिकेंस है, तीर्थ का अपना सिग्निफिकेंस है, एंड तप का अपना सिग्निफिकेंस है, लेकिन अल्टीमेटली दुख निवारण के लिए विजडम ही चाहिए। दैट इज द टीचिंग विच इवन बुद्धा gave, and that is actually the very you can say highest level of understanding also. So now you can connect with it. When you talk of dan dakshina, you're talking of being a karam yogi. When you're talking of bhakti, you're talking of bhakti yoga, for cleansing of the heart, purification of the heart. And when we are talking of meditation, dhyan samadhi, you're talking of raj yoga. And we are talking of the highest wisdom, Gyan yoga. So we are actually talking of the union of all the four paths of yoga. How many of you can understand this? Making sense? Yes? Yes or no? Okay, now let's have some people share. क्या क्या ओपन अप हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? And Sanjeev, I would need your help if it is getting too heavy. Huh? Yes, Parina ji, go ahead. I have a doubt, शशि जी। ये जो आपने भक्ति की बात करी और ये बोला कि प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट इज रिलेटेड टू तीर्थ, Is आई related डिडंट to अंडर तीर्थ, मंदिर जाना, पूजा हाँ, करना, हाँ, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट के मंदिर जाना या पूजा करना, हाउ इज दैट रिलेटेड टू प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट? okay. So you मतलब आई need to डिडंट अंडरस्टैंड understand. द कोरिलेशन। Okay, when I say Tirth, that is why I said it is not only Tirth, it is related to everything connected with God, right? So surrender to God. Surrender to God कैसे करते हैं हम लोग? सबसे कॉमन एक्सपीरियंस क्या है? मंदिर जाएंगे आप, और एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर दैट मैटर, है ना?
तो गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या मस्जिद जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो यू गो देयर ऑन ए शेड्यूल्ड डे एंड डू योर नॉर्मल प्रैक्टिस एज ए रिचुअल एंड देन यू कम बैक. दैट इज भक्ति फॉर मोस्ट पीपल. Right. कुछ लोग सत्संग करेंगे, कुछ लोग उसमें भजन गाएंगे, कुछ लोग डांस करेंगे. तो ये क्या हो रहा है? ये सब प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट है, बिकॉज यू आर प्यूरिफाइंग योर इमोशंस. हार्ट मीन्स इमोशंस, करेक्ट? तो इन सब से True. जब आप सरेंडर कर रहे हो टू द डिवाइन, यू आर एक्चुअली प्यूरिफाइंग योर हार्ट. और हार्ट में ही सारे इमोशंस ही सारे नेगेटिव होते हैं. असली प्रॉब्लम वही है. So that is True. why bhakti yoga is considered as purification of heart, because ultimately surrender to divine will give you, invoke the love in you, and heart is related to love, right? Highest emotion is love. So when love is invoked, then the heart becomes pure. तो पहले True. चैरिटी से आप अपने ईगो से बाहर निकलेंगे, और फिर भक्ति करके लव इन्वोक करेंगे. उसके बाद जब आप ध्यान में बैठेंगे, then that Gyan will make some impact on you. Then you will be on the path of self-realization. So all the four yoga are important. Though they are interwoven into each other, you follow one, all the four will come together. But you have to be very, very clear in your understanding that all the four will actually give you the state where you can be free from the suffering and miseries in life. So Gyan Yoga is the highest wisdom which can actually relieve you of your suffering and misery. That is the teaching. Yes. So I hope I have answered your question. Hanji. Perfect. Thank Very you. good. Let's acknowledge Parinam. Yes. Anybody else who would like to share? Let me welcome the guests who are joined a bit late. So Bhupesh Sharma ji, welcome. And Anshu ji, welcome. Yes. And anything that you want to ask or you want to share, please feel free. Okay, Sanjeev, you want to add something? The question raised by Parina is so very valid to understand for everyone. When you're talking about free from suffering, the main word is yoga. The main word is yoga, and yoga is practically, in a way, pure self-purity. Whether it is actually yoga or Gyan or Bhakti or Dhyan, anything. Moment something has this word yoga is the real purity of self, body and mind. Actually, body is always pure. Frankly speaking, we face this suffering and pain in our physical body. It is actually never because of body level. It is always because of the mind level. And purity of mind is the biggest game. And moment we have anywhere the word yoga is used, that is one of the way to purify the mind and actually free from suffering, or rather we can even say till the level of liberation. That's what I can say simply. Fantastic. Very good. Bahut badhiya. Let's acknowledge Sanjeev. Okay, anything else? Anybody wants to share what is opening up? Those who have been silent so far. Gunjan, Nivedita ji, Parveen ji, Anshu ji. Yes. कौन पूछना चाहेंगे? या शेयर करिए जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं अभी. Yes, Gunjan, go ahead. It's my experience from the past 2 weeks. जब हमारा program चल रहा था relationship का, and my father called up from America and he was not well, and I got really upset seeing him on the video call, and मैंने session attend कर लिया, but my mind was all cluttered with his clutter, like my father's clutter. So, but still मेरे को session attend करना था because I was not getting calm inside. So I attended the session and I actually cried a lot and I called up you. And मैंने कहा सर मुझसे नहीं सहन हो रहा, मुझे ऐसे लग रहा है मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे फादर वहाँ हैं, उनको कुछ हो ना जाए, he has COVID and he was crying. But then you said
just calm down and rest, and you have forgotten that you have to surrender it to God. So then I sat with myself, I surrendered, मैं calm down हुई, मैंने meditate किया, I slept for some time, and I got the results when I got up. I was fresh, and there was nothing. My father said I was drunk. Why were you crying? I said, oh God, you were Okay. drunk and I was crying here. Okay, I got that. Yeah. Gunjanji, that's okay. We'll just acknowledge. Thank you. So basically, you have to understand the outside situation is just a trigger, like we discussed in the last session. The suffering and misery is all inside you, and that gets triggered. तो बाहर की दुनिया में कुछ भी ढूंढना बेकार है, क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन है ही नहीं. आपको सब कुछ अपने चित्त में ही ढूंढना है. प्यूरिफिकेशन ऑफ द चित्त, विच संजीव सेड, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड. आई कॉल दैट एज चित्त. मन बुद्धि चित्त अहंकार बोलते हैं. तो चित्त में आपके इतने विकार हैं जितने पैसिफिक ओशन में क्या बोलेंगे, जीव हैं. हाँ, मछलियां हैं. यू कैन थिंक इट दैट वे. मछलियां भी ज्यादा बोलती है. यू कैन से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ पैसिफिक ओशन. हाँ, दैट इज अ काइंड ऑफ विकार यू हैव. एंड इफ यू कैन नॉट डू प्रॉपर स्वाध्याय, यू विल से मेरे अंदर कोई विकार ही नहीं है. ऐसे मेट मेनी पीपल हु से दैट मेरे विकार तो सब खत्म हो गए. मैं 3 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे सारे विकार खत्म हो गए. कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपनी फोटो दे देना. आई नो न्यू अवतार इज बॉर्न. Need to understand, you are on a journey where you have taken 100 births till now, and maybe another 100 births are pending. आगे चल के आएंगे. इतने जन्मों के विकार आप लेके घूम रहे हो, उसको आपको लगता है 3 साल की मेडिटेशन. I'm not disputing it. Maybe if you have done enough work in the last birth, a Shankaracharya can be born at the age of 5. I'm not denying that. But in general, if I talk, then just simply saying that my life was miserable for the first 40 years, and then in the last 3 years I have done enough, and now there is no further required, nothing else is required, I am clear, मेरा चित्त clear है. If you are breathing, then your चित्त needs to be healed, because in every breath we are actually healing our चित्त. Healing means purifying our चित्त. तो अगर आपकी ब्रीदिंग चल रही है तो अभी आपकी हीलिंग बाकी है. और इसके बाद भी अगर आप दूसरे शरीर में आएंगे और फिर उसमें भी अगर आप ब्रीथ करते रहेंगे तो आपकी चित्त की प्यूरिफिकेशन बाकी है. ठीक है. आई एम मेकिंग ए वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, मे बी ए ब्लंट स्टेटमेंट, but that is truth. So people who think that their spiritual work has got completed, let me tell you, it is not. As long as you are alive, the job is on. Keep doing it. Keep breathing, keep healing, keep purifying your चित्त. So the crux of the whole wisdom of Buddha is also कि अपने चित्त को साफ करना है. अगर आपके रिचुअल्स ऐसे हैं जो आपके चित्त को साफ करते हैं, do the right and get the right understanding and then follow it. And I have a very special understanding of rituals. Rituals में अगर आप अपने सोल को डाल दो तो स्पिरिचुअल हो जाता है. तो पूरे दिल से, दिमाग से और तन मन धन से अगर आप कोई भी रिचुअल करो, चाहे वो अगरबत्ती जलानी हो रोज शाम को और सुबह दिया जलाना हो, पूरी आत्मा को झोंक दो उसमें, एंड दैट विल बिकम स्पिरिचुअल. सो रिचुअल को स्पिरिचुअल बनाने में टाइम नहीं लगता है. ओनली थिंग इज यू हैव टू डू दैट विथ फुल पैशन. Show your passion towards God rather than material things, and you will get success in both the materialistic world as well as in the spiritual world. Making sense? So that is why rituals जो follow करते हो करो, because that will be a reminder. और कब वो spiritual हो जाएगा you don't know, and then your journey will get a booster dose. So follow all the paths, but focus on the ultimate wisdom. That is my understanding of Buddha's teaching of Gyan. So coming back to the wisdom. Now, when we are talking of wisdom, anything, and now I'm making again a very bold statement, any activity, anything that gives you an opportunity to cleanse your चित्त, go for it. चाहे वो वेडनेसडे सेशन अटेंड करना हो, चाहे वो कोई स्पेशल वीकेंड प्रोग्राम्स अटेंड करना हो, चाहे वो विपासना जाना हो, चाहे अपना मेडिटेशन प्राणायाम जो मर्जी, वॉकिंग करनी है सुबह वॉकिंग करो, अगर उससे आपको साफ होता है. आप सुबह उठ के अगर जूते चप्पल खोल के घास पे चलते हो, दैट गिव्स यू वेरी वेरी पावरफुल ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस. बाय द वे, आप अगर सुबह उठ के योगा करते हो और शवासन में गार्डन में जाके लेट रहे हो, दैट गिव्स यू वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज यू आर क्लींजिंग योर बॉडी एंड माइंड
बॉडी अपने फिजिकल डिसीजेस को आराम देगी और आपका माइंड जो है अपने विकारों को छोड़ देगा। तो अपने विकार कौन कौन से हैं सबको मालूम है इन जनरल? या तो तामसिक है या राजसिक है, यही छोड़ने हैं, सात्विक तो पकड़ने हैं, है ना। सात्विक गुणों को तो पकड़ना है हमको, तमस और रजस को छोड़ना है। तमस और रजस में क्या आते हैं? डिजायर्स, लस्ट, ओके। सो एनी डिजायर, जब हम काम बोलते हैं तो एनी डिजायर होते हैं वैसे, बट इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ लस्ट। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, छल, आलस, हट, stubbornness, all forms of ego, any type of ego that you can think of, all these are विकास। और ये भरे पड़े हैं, डॉर्मेंट होते हैं, हम सोचते फ्री हो गए, फ्री नहीं हुए। जैसे सिचुएशन बाहर आएगी वो दोबारा से ट्रिगर हो जाएंगे। ओके, सो दैट इज व्हाई द हाईएस्ट विजडम दैट वी आर टॉकिंग ऑफ, it makes sense only if it is cleansing you of your chitta. Yes, so now let us have some sharing about your spiritual journey. What spiritual journey are you undertaking to ensure that you are cleansing your chitta? Do some introspection and share if you can. अभी तक क्या किया है और आगे क्या करेंगे? Who wants to share? अभी तक आपने क्या किया है और आगे क्या प्लानिंग है आपकी, अपने चित्त को कैसे साफ करेंगे? क्योंकि I understand, I take it for granted that all of you are active seekers who are actually looking for Buddha's wisdom of दुख निवारण, सफरिंग, मिजरी को खत्म करना है, फ्रीडम होनी है उससे। ये आपको चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ, एटलीस्ट दोस हु आर इन दिस Zoom session right now and those who are going to watch later. Okay, so what is opening up? कौन बोलना चाहेंगे? Yes, Rupa, you raise your hand. Yeah. So I just wanted to tell you that the activity that you said of getting connected to the divine, like you have that cloud and the golden rain coming. Okay, don't go for the technical thing, just simply say that, yeah, because this is a Wednesday session. Huh? Okay, so that activity helps me a lot, you know. For the rest, of course, the rituals that we all are raised up with, we do that whichever way we can. But that addition, that really helps when you want peace. You just think like it's connected and you feel that inner kind of a peace. Very good. So you have learned some techniques in the program, maybe the healing program or the NLP program, right? Correct. And you are applying that. Okay, good. So that gives you... I do. I feel lighter doing those healings. Absolutely perfect. So feeling lighter means what? Your heart chakra is getting pure. Healed. Okay. Yeah. It is getting healed in a technical way, but right now, if we talk in the language, then your heart is becoming pure, mind is becoming pure. So that is very, very, very good. So that is the kind of introspection you need to do and see this works. Now the next step, going ahead, उसको आगे कैसे लेके जाना है, that is what you need to think, right? Okay. Very good. Anything else you want to share? Because of those, I feel that the triggers are reduced. Fantastic. Trigger. Very good. तो बाहर से कुछ भी हो रहा हो, अंदर से आपके टाइम बॉम्ब डिफ्यूज हो चुके हैं, इसलिए you are not feeling that disturbance. Correct? Yeah. Yeah. Okay, very good. Let's acknowledge Rupa. That's very good understanding and good sharing. Anybody else who would like to share? Yes. So our Wednesday program, our weekend programs are very, very helpful in your spiritual journey, so that you can get rid of your vikars. Okay. So how many of you have experienced it? I think all of you must at some point of time have attended my programs, right? Or any other program for that matter. It has cleansed you of your chitta, and that is why you feel light. Very simple. Okay, anybody else? Sanjeev, you wanted to share something? Actually, I have a question for everyone, and I want to throw a challenge, or maybe not a challenge. Let's introspect. आज का टॉपिक है ज्ञान योग, path of wisdom. So, how many of you do you think can stop going to your religious place, mandir, masjid, gurdwara, जहाँ भी जाते हैं? How many of you think you can actually stop going there, puja karna chhod sakte hain? Let me understand from you. Let's see your hand. Okay, 1, 2, 2 hands practically. Okay. Yeah, Nivedita ji, you want to say something? क्यों, क्या जरूरत है उसकी? अगर जाए तो भी
व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? क्यों नहीं जाए? और या तो अगर जाते हैं तो गो विद द फुल zeal, ऐसा ही नहीं खाली गए चलो चले गए, ऐसा नहीं है. व्हेन यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग विद अ पर्पस. It's a way of surrender, like how we have been brought up. And so निवेदिता जी, आपने बहुत अच्छा बोला। मैं तो आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मंदिर तो आपके शरीर के अंदर है, तो आपने बहुत अच्छी तरह लाइफ एंड ब्रेथ में सीखा है, तो क्यों जाना है? राइट, राइट सर. फिर भी लाइक घर में ही मंदिर है मेरा, मतलब जहाँ मैं पूजा करती हूँ सर. तो अगर वो जगह पे जब मैं जाती हूँ, दैट दैट प्लेस itself has got a different vibes. So I can feel at least. सो So यू आर that is सेइंग, one. आपने मेरे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करा, क्यों नहीं जाना है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? सो आई एम हाँ. होल्डिंग क्वेश्चन फॉर अ मिनट। नहीं नहीं, मतलब क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, मैं हाँ, ऐसा बोल रही हूँ कि अ, नहीं जाएंगे. ओके, पर क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, वाई वो नॉट टू? अगर व्हाई जाते नॉट? हैं तो वाई नॉट? हाँ. या Got it, ठीक है। I'll keep that question for a minute aside. Anyone else, or maybe anyone who raised hand कि okay, I can, so what is the reason? या Parina? So Sanjeev ji, since a very small age, I have held that belief that I kind of carry my temple right inside me. So in the sense, आप चाहे घर की कोई भी जगह हो, कहीं पर भी हो, आप जहां पर बैठकर एक बारी ध्यान में बैठ जाएं और उसको याद करें, या अपने अंदर आप जैसे मेडिटेट करते हैं, जैसे आप यूनिवर्स से या पावर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप अगर वो करें, वो ही स्थान मंदिर बन जाता है. लाइक दैट इज वेर एवर यू आर डूइंग, वट एवर प्लेस यू आर डूइंग, कहीं पर भी बैठ के. एंड जहां तक रिचुअल्स का सवाल है, I don't like disregard any of the rituals. I have been a part of so many of them, being brought up, seeing everything in the family and being brought up among them. I also follow some of them, and when I do it with all my heart. But the idea, I still feel, अब जैसे अभी सावन का महीना, just a small example, अभी सावन का महीना होकर हटा. So I was fasting on Mondays and I still am on Mondays. So पंडित जी, बेल पत्तर भी चढ़ाना है, धतूरा भी चढ़ाना है, ये भी चढ़ाना है, शिव जी को वो भी चढ़ाना है. The kind of lives that we are leading, sometimes everything, all of this is not possible. आप जॉब भी देख रहे, घर भी देख रहे, बच्चे भी देख रहे, सब देख रहे हैं. It, you can't take out time for all of this. So I feel in my heart, मैंने आंखें बंद करके अपने परमात्मा को याद किया, उसके साथ कनेक्ट किया, और मैंने वो ध्यान करते करते ही उस ध्यान में उनको बेल पत्तर भी चढ़ा दिया, धतूरा चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, सब चढ़ा दिया वहीं पर ही. तो मेरे लिए मेरी भक्ति कंप्लीट है, कि मतलब मैंने दिल से अर्पण किया, एंड मैं यही मानती हूँ कि दिल से अर्पण किया तो वहां पर पहुंच गया. दैट्स इट. लाइक, so that is what is the belief. So I feel that it's okay for me not to go to any religious place for that matter. Thank you very much. Thanks a lot for sharing. I think Parina deserves a big round of applause. जो माइंड लेवल पे अपने आप सब कुछ चढ़ा दिया, वही एक्चुअली में चढ़ाना हुआ। अदरवाइज वो सिर्फ, जो शशि बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल में से स्पाई हटा दो तो रिचुअल बन के रह जाएगा वो। तो रिचुअल ना बन के रह जाए। ओके, दैट्स लवली एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। Parina, एनीथिंग एल्स विल गेट बैक टू, लेट्स सी। अभी प्रवीण जी और निवेदिता जी दोनों ने हाथ उठाया। प्रवीण जी, ओवर टू यू। हाँ जी, मैं लाइक rituals I don't do. मतलब it was not in our family also to do too many rituals, going to the temples and all. But I am गुरुद्वारे में हम बिलीव करते हैं, तो वहाँ मुझे सीख मिलती है. I get a teaching. जो उनके कीर्तन भी होते हैं, I learn. And I don't know, even if there's no kirtan going on, if I just go to do Mata Teko, तो जो भी मैं मांगती हूँ, by grace of God I get it. So I believe in going to the Gurdwara still. It's not a regular everyday feature, but जाती हूँ. और if I go, I like to go at the Kirtan time where I can learn. It's all Vedanta over there also. Wonderful, wonderful, super. Thank you. And Thank what you. Pravinji just shared, this is one point we need to really understand as the ज्ञान योग वर्सेस जब हम भक्ति योग में आते हैं.
And Pravinji, it is not against what you're talking. This is my point of view, what I have understood, and what being with Buddha and Vipassana a lot, वहां से मैंने जो समझा है, हम जब भक्ति योग में जाते हैं, हम जनरली या तो अपने दुखों के निवारण के लिए जाते हैं, मेरे कष्ट हर लो, या कुछ मांगने जाते हैं. Now this is where my question was coming. Otherwise it is not about challenging and anything. अगर हम भक्ति योग में हैं और हम दुखों के निवारण या कुछ मांगने जा रहे हैं, हम भक्ति में हैं, योग में नहीं है. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. और जब हम भक्ति में हैं और योग में नहीं है, तो हम ज्ञान योग से दूर हैं. जैसे प्रवीण जी ने बोला, मैं जाती हूँ वहां पे, ज्ञान लेके आती हूँ, नॉलेज लेके आती हूँ, सीखने को मिलता है, देन इट इज एक्चुअली योग. और वो भक्ति योग और ज्ञान योग का सम्मिश्रण हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है. बट अगर हम सिर्फ भक्ति में, जहां भक्ति में आके डर के मारे हम कुछ मांग रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, या कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाए, या हम अपनी किसी चीज के लिए जा रहे हैं, वो सेल्फिशनेस है, वो डील है, वो ट्रांजैक्शन है, वो लव नहीं है. एंड दिस इज वेयर आई वांटेड टू हाईलाइट दिस पॉइंट. इट्स नॉट अबाउट कि जाना है या नहीं जाना है. नोबडी सेज ये करना है नहीं करना है. बट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन भक्ति and bhakti yoga, and that's how Gyan Yoga will be actually working in your life. That's what I wanted to say. Thank you very much for sharing. निवेदिता जी ने भी हाथ उठाया था, आप भी बोल सकते हैं, अगर बोलना चाहते हैं. शशि, सॉरी. No, it's okay, sir. I agree. Well, Parina, I can understand. I have been also working woman, but still, वो जो going to temple वाला नहीं बोल रही हूँ. वो मेरा temple जो है ना, वहाँ दिया लगाना है जरूर. That's what I believe, and that is a part of the discipline. And you be there. So हम लोग बोलते हैं ना, भगवान हम सब में है. That is what. Still, when you go there, that is the only thing. निवेदिता जी, आप जो बोल रहे हैं ना, आप भी ज्ञान योग की बात कर रहे हैं. हाँ, आप वही की बोल रही हूँ सर. एग्जैक्टली. सुपर सुपर वंडरफुल. Very good. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Sanjeev. Thank you for mobilizing the group and getting some sharings out of them. Right? Very good. Let's acknowledge everybody who shared. And just to tell you a little bit about जो हम दिया जलाने की बात करते हैं, तो हम मिट्टी का वो दिया होता है, उसमें हम घी डाल के और फिर उसको जलाते हैं. सिंबॉलिक क्या है मालूम है? ये शरीर जो है हमारा, वो मिट्टी का बना हुआ है, और इसके अंदर जो आत्मा है उसको हम इन्वोक कर रहे हैं, डिविनिटी को इन्वोक कर रहे हैं. दैट इज एक्चुअली द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइटिंग ए दिया. और फिर हम एक दिए से दूसरे दिए को जलाते हैं, तो वी आर लाइटिंग अप ईच अदर्स. जो अवेकन सोल है, वो दूसरे जो सो रहे हैं उनको जगा रहा है. तो इट इज अ सिंबल ऑफ एक्चुअली अवेकनिंग. So keep doing that. It will remind you that I am awakened. Let me awaken others. That is the thought process. So it will be always connected. Like Sanjeev said, Gyan will always be there. Very good. Let's acknowledge everybody who shared. Wonderful. So having understood why Gyan Yoga is the most difficult, so-called difficult process, because जब तक वो process पूरा नहीं होगा, तब तक ज्ञान योग का जो बोलते हैं कि इन्वोकेशन या जो भी है वो नहीं होगा. विजडम इन्वोक नहीं होगा unless you have prepared yourself to that level. And by the way, bhakti yoga is supposed to be the easiest, right? Yeah, क्योंकि उसमें आपको रिचुअल्स करने हैं. लोग लगे हुए हैं, 40 साल से लगे हुए हैं रिचुअल्स में, फर्क कुछ खास नहीं पड़ा, लेकिन रिचुअल्स कर रहे हैं. कब काम आएगा वो स्पिरिचुअल, कब होगा पता नहीं. इसलिए ऐसे डोंट गिव अप ऑन द रिचुअल्स. Even if it is mechanical, at least do something. It is better than going to a club or going to a movie or going to a party. तो अपने rituals को पूरा करो. Even if it is a ritual, keep doing that. Some point of time, awakening आ जाएगी. रोज दिया जलाओ, कभी ना कभी अंदर का दिया भी जल जाएगा. Correct? So that is the significance of Gyan Yoga, and I've given the reference of how Buddha came into the full awareness of the Gyan, and then he distributed that. We will continue this discussion later on in the next session and see what are the steps that he designed for people to follow it very, very easily. But right now, I want to touch on something else. We are talking of purification of mind, purification of chit, right? And as I have said, you should pick up each and every opportunity that comes your way where you can actually purify your chit. So one such opportunity is coming very, very shortly. This is the Shraddh time. How many of you know that this is Shraddh time from 18th September? And as is
regular feature from my side. I do the Shraddh healing, special healing during the Shraddh days, and I carry that on with the Navratris till the Dashera. So from 18 September onwards till 12th of October, there is a special divine healing period, and we are going to do the ancestral healing along with the Navratri Puja. So I've posted that in the group. How many of you read that post? नहीं देखा है तो देख लीजिएगा. It has been posted in DHV Wednesday group and it has been pinned also, so you don't have to search. ठीक है, pin किया हुआ है उसको, तो आप देखेंगे, so it will give you some idea. This is a very powerful way of cleansing your chit. Let me tell you that. ये इसी पीरियड में होता है पूरे साल में, किसी और टाइम पे ये पूजा नहीं होती है, क्योंकि ये श्राद्ध के जो दिन हैं ये सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं फॉर द हीलिंग ऑफ अवर एंसेस्टर्स. पितृपक्ष भी बोलते हैं, कितने लोग पितृपक्ष को मानते हैं? Yeah. So it is absolutely healing your ancestors. Now it gives a you can say booster dose to the souls of the ancestral souls. तो वो जिस मर्जी फॉर्म में हो, चाहे अगले जन्म में आ चुके हों या अब इस एनर्जी लेवल पे ही हों, उनकी जर्नी में काफ़ी उनको क्लियरेंस मिलती है, एंड दे मूव फॉरवर्ड इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी, एंड विद देयर ब्लेसिंग्स योर जर्नी स्टार्ट्स मूविंग इन ए वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन. And if you talk of cleansing of chit, your genetic karma is hugely impacted by this special healing. तो एक हमारा past lives karma होता है, I've said that before also. एक हमारा past lives का karma होता है, soul having different life forms, so there is a whole lot of past karma which are coming. एक वो है, एक present life के हमारे karma है childhood से, correct? And one is a genetic karma. अभी हम जिस life form में हैं, हमारे जो ancestrals, हमारे जो 7 पुश्ते जैसे बोलते हैं हम, तो 7 generations अब उनके इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल पेन, एवरीथिंग इज ट्रांसफर्ड टू अस थ्रू द जीन्स. तो देयर इज ए ह्यूज लॉट ऑफ जेनेटिक कर्मा विच वी आर कैरिंग. आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कई जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो बीमारी के फॉर्म में आते हैं. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड मेनी अदर क्रिटिकल डिजीजेस आर देयर विच कम आफ्टर एवरी 3rd और 4th जनरेशन, रिपीट होते हैं. और उस सच क्रिटिकल डिजीजेस दे आर एक्चुअली फेटल. So when you do genetic healing, you get free from all such kind of disorders. How many of you have heard about family curses? बहुत सारे पंडित एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं आपको कि फैमिली कर्स चल रहा है, कई जनरेशन्स पहले कोई सुसाइड या कोई मर्डर हुआ या कुछ हुआ ऐसा, एंड उसका जो कर्स है वो चलता आ रहा है, तो श्राप है. पिक्चरों में तो हमने बहुत कुछ देखा है, बट एक्चुअल लाइफ में भी ये होता है. तो जेनेटिक कर्मा इज समथिंग विच इज definitely very impactful in your life, and you can free your genetic karma very powerfully, not only for this lifetime but for all the lifetime. आप हर lifetime में आपके ancestors अलग अलग होंगे, correct? So there is a huge backlog of genetic karma which needs to be healed, and this is a very powerful time to get your healing start. So you can go through the post. In case you have need any clarification, you can get in touch with me. And it will be starting from 18th September to 12th October. And this is what we call as the ancestral karma. I know many people have already told me about their keenness to participate in this program. So very soon we will be forming a group and we will be adding you there. But right now, if you need to ask any questions or anything related to that, you're welcome. Because this is also a very powerful way of cleansing your chit, purifying your mind, and enhancing your spiritual journey, not only your spiritual journey, but also your materialistic world success. Yes. So anybody who wants to know something about it or any questions, you can. Sir, can I ask something? Yeah, sure. Go ahead. सर, जैसे हम भी अपने एंसेस्टर हो सकते हैं? किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है. हो सकते हैं. Okay. बिल्कुल हो सकते हैं. इसीलिए आपकी हीलिंग करने से आपके बहुत सारे एंसेस्टर्स का जो लाइनेज है, वो लीनिएज है, वो क्लियर हो जाता है. मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, यस. बिकॉज ये अल्टीमेटली आपके कार्मिक रिलेशनशिप तो यही है ना. जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट ऐसे गॉस्पेल ट्रूथ. आप अगर चार लाइफ टाइम्स हैं आपके, ठीक है जी. तो जैसे नॉर्मल सीन है, मैं वैसे सुना देता हूँ. एक में आप हिंदू हैं, एक में मुस्लिम है, एक में क्रिश्चियन है, एक में मोहम्मडनियन है, मुस्लिम है. तो आपने एक लाइफ टाइम बिताया, उसमें आपके एंसेस्टर्स कोई और हैं, बिल्कुल है. उसके बाद आपने दूसरा जन्म लिया, उसमें एंसेस्टर्स कोई और हैं आपके, करेक्ट. तो ऐसे आपके ये 4 बर्थ हो गए. 5वां बर्थ आप कहाँ लेंगे?
अगर यही आप ऑप्शंस हैं आपके पास तो वापस उसमें आ जाएंगे आप सेकंड लाइन में। तो आपके फर्स्ट के बाद 5th जनरेशन, जो आपका 5th बर्थ होगा, पॉसिबली इट विल बी इन द आपके 4 जनरेशन के बाद, क्योंकि तब तक 4 जनरेशन निकल चुकी होंगी आपकी। तो 4th या 5th जनरेशन, नाउ इट कैन बी 10th, इट कैन बी 20th, आई डोंट नो which where you will come back to the same line, but there is a very huge possibility that you will be born again in the same lineage. Possible है, correct? So it is a possibility. So all the more important that you heal your ancestors, because possibly you would be healing yourself. Yes. Yeah. So that is an important revelation. You can think that. Yes. Good question. Anybody else Thank you. who has any doubts or questions? Shashi ji, how will this be the healing? You will be doing it, or it will be done? No, no. We'll be there. I will be doing that. I'll be doing that. You won't be doing it. Okay. Okay. It is a group healing. So a group will be formed, and all the people who are in that group will be receiving that healing. And yeah, so you will be receiving that healing, and you will experience the cleansing of the chit happening, and it will give you some great results in life. तो बहुत शशि केसेस जी, में होता है, कोई रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हों, कोई मेजर प्रॉपर्टी आपकी जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, ऐसे कोई इश्यूज हैं अगर, तो इनसे फर्क पड़ता है, विच इज माई एक्सपीरियंस। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो बीमारियां हैं वहां पे बहुत फर्क पड़ता है। ओके, एंड सम फैमिली कर्सेस जो बोलते हैं, अगर वो दिख रहा है, विच इज ऑफ कोर्स आई डोंट नो मच अबाउट एस्ट्रोलॉजी, बट एस्ट्रोलॉजी में अगर दिख रहा है कि फैमिली कर्स है या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, तो ऑल दैट कैन बी हील्ड विद दिस काइंड ऑफ हीलिंग, वेरी वेरी पावरफुल. This I know because of my experience, what people have shared after going through this. I've been doing this for the last 4 years continuously, very religiously. I've been doing that after the lockdown. So that is my experience. Yes, Parina ji, you want to ask something? Anji, I just wanted to know, this is going to happen again on the weekends, or No, like continuously from 18th September to 12th of October. 24 hours healing will be there. It's a distance healing, which I अच्छा, will be doing for all of you. Well, those who are there in that group. You don't have to do okay, anything. Possibly you will get some prayers. You need to do that in the morning and evening. That's all. okay, आपको all कुछ नहीं right, करना है, आपको ठीक है, सिर्फ रेडीनेस में रहना है, और जो मैं बताऊंगा उस हिसाब से थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस कर लें. ठीक, करेक्ट? या, थैंक यू. वेरी गुड. Anybody else who has any question? We have just touched the scheduled time, so we can take another 5 minutes. So anybody who has any question? Yes, Sanjeev, go ahead. So Shashi, I would like to share something related to our topic today once the question round is over, to give a connection between Bhakti Yoga and Gyan Yoga. Mhm. So I would like to share after we are done. Maybe a Okay. single line sort of thing. Okay, great. So let me just check. Anybody who wants to know anything about ancestral healing, which we talked about right now? Clear? Okay, good. So the post is I already want to, there in the I, Venice. Yeah. sorry, I want to share something. Uh-huh. जो संजीव सर कह रहे हैं भक्ति एंड योग Oh, and hold on. ध्यान. We will come to that. Hold on. Okay, Let me okay, close this chapter, this discussion. Right? okay. Yeah. So I've already posted that in the group. So all of you can go through that post. And in case you have any kind of clarity you need, you can get in touch with me. There's still a lot of time that we have. So if you have any kind of questions, you can share that. And also you can share that in your own personal groups. So there are people who might be suffering. कोई property dispute चल रहा है, कोई like we say some diseases which run in the family. Normally nothing runs in the family, but still अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ है, तो strong belief system which are running in the family, all these can be easily handled and healed in the ancestral healing program. Yes. Okay, so we complete this part of the discussion. So now Sanjeev, over to you. You wanted to share something? Go ahead. And Shashi, just to get out of rituals and getting into spiritual Bhakti Yoga, one of my learning, my take, which I would like to share with everyone. हम सब कहते हैं भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है, तो सिर्फ एक प्रोसेस को जो मैंने फॉलो करना बहुत स्ट्रांगली शुरू करा है, आप जो चीज मंदिर में जाके, चाहे घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में, आप चढ़ावा चढ़ाते हो इन द फॉर्म ऑफ फूड और सम जो ऑफरिंग देते हैं, आप अगर
वही चीज अपने बॉडी में डालते हो तो वो भक्ति योग ज्ञान योग के साथ होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आप अपने बॉडी में डालते हो जो मंदिर में चढ़ावे में नहीं चढ़ा सकते हो, तो वहां आप एक्चुअली में भगवान का निरादर कर रहे हो या अपने अंदर के भगवान का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। गिविंग एग्जाम्पल, अगर आप अल्कोहल इस मंदिर में चढ़ाते हो तो सोचना कि ये उस मंदिर में चढ़ा पाते हो क्या। अगर उस मंदिर में चढ़ाते हो तो इस मंदिर में चलेगा। उस मंदिर का मतलब किसी भी मंदिर में जाके जब आप भोग लगाते हो, वहां पर अगर अल्कोहल चढ़ाते हो तो इस मंदिर का अल्कोहल चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, आप अपने अपने बनाइएगा। एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन द ज्ञान योग एंड द भक्ति योग टू बी अ टू गेट इनटू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ mind and life. That's what my point of view is. Thank you very much. Shashi. Fantastic. Very good. Very good. बहुत बढ़िया. And I'll pick up one line which we picked up in our life and breath and limbs program. No? Like this body is a temple of the living God, and I am the living God. Yeah. So I am the God, and I am living in this body. So you take care of that. Take care of this temple first, and then go to the other temple. That makes sense. All right. Very good. Yes, Gunjan, you wanted to share something? Yes, sir. I have been reading Gurbani since 2016. I was trying to understand it since 2016. तो मैं जब भी जाती थी गुरुद्वारे में बैठती थी, बाबा जी आप मुझे जो भी वहां पर पाठी हैं तो उनको कहती थी कि मुझे बताओ इसमें लिखा क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा। बट नाउ लाइक विद हीलिंग्स एंड एवरीथिंग योर कंट्रीब्यूशन, मुझे एक एक शब्द समझ आता है कि उसमें लिखा क्या हो। मैंने Fantastic. आज तक कभी गुरुमुखी मैंने कभी नहीं पढ़ी, कभी मैंने लर्न नहीं की, बट नाउ आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू। मेरी जर्नी बहुत लंबी थी 2016 से 2024 तक, बट मैंने पूरी किया। Wonderful, wonderful, very good. Let's acknowledge Gunjan. Yes, and the journey has just started, huh? So never say it is completed. It is just started. Yes. Now you are got onto the track. So right understanding. This is the importance of wisdom. When the Gyan comes, the right wisdom comes, the right understanding comes. तब सब कुछ क्लियर हो जाता है। जो लाइफ एक जिक्सॉ पजल लग रहा है, सिर्फ एक पीस मिसिंग होता है, वो पीस लगा लो, पजल इज सॉल्व। नाउ यू कैन सी द होल पिक्चर। If a few pieces are missing, you can never see the whole picture. And that is the beauty of the divine wisdom coming in. You get the perfect understanding of life. And then you will live life powerfully the way you love. Great. So with this, we come to the end of the session. Anybody who wants to share, take away from this session? कौन बताना चाहेंगे? Anybody? जो पहली बार आए हैं, भूपेश जी कुछ शेयर करना चाहेंगे आज इस सेशन से क्या लेके जा रहे हैं? अगर आप रेडी हैं तो यू कैन शेयर। सुशील जी, विजय जी ने आज कुछ नहीं बोला, क्या लेके जा रहे हैं? सुन रहा हूँ सर। हाँ, तो लेके क्या जा रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग तो सेम चल रही है ऑल अलोंग इन डिफरेंट सेशंस। Okay, great. Bhupesh ji says Gyan. Okay, so he must be busy somewhere, but he says one word, Gyan लेके जा रहे हैं. Okay, good. Right understanding लेके जा रहे हैं. Okay, सुशील जी, okay, बता दिया आपने। नहीं, आपने नहीं बताया। सुशील जी क्या बताएंगे? नहीं, मैं आपने जो बात की पितृपक्ष में ये श्राद्ध करने की ओर की, वहां में बिल्कुल भी आई एम सॉरी टू से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाया आपके साथ, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग जैन रिलीजन के हिसाब से हुई थी। और जैन में हम लोग नहीं मानते हैं कि जो आत्मा चली गई वो चली गई, और उसके पितृपक्ष का दोष है जो तो कुछ भी नहीं मानते। आपके प्रारब्ध है, आप बिना परमात्मा के उनको करो, उनसे आगे बढ़ो। और कभी भी हमको ये कोई अर्पण करना, पूजा करना या पितृपक्ष दान करना, पिंड दान देना, कभी न तो हमारे रिचुअल में है, न कभी मेरी थॉट प्रोसेस में। That's fine. So you need to challenge your thoughts and see अगर साइंटिफिकली आपको लॉजिकल लग रहा है कोई चीज, क्योंकि साइंटिफिकली व्हाट आई कैन से इज दैट साइंटिफिकली नहीं लग रहा है, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट कनेक्ट बिकॉज़ टोटली इलॉजिकल। I am in my this life birth. I am to lead this my life birth. Whatever product that I have come with, I understood. उनको मुझे मेरे विवेक से, उनको मुझे मेरे बिना प्रमाद के उसको आगे बढ़ना से। सुशील जी, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया मैं।
साइंटिफिकली सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, आपके अंदर जीन्स हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, कहाँ से आए हैं? एंसेस्टर से आए हैं ना, एंसेस्टर से आए हैं ना। तो स्क्रिप्चर्स में जो हमको सिखाया गया है कि जो हमारे जो संस्कार हैं, जो कर्मास हैं हमारे, वो 3 लेवल के होते हैं। एक पास्ट लाइफ है, एक प्रेजेंट लाइफ है, और एक जेनेटिक कर्मा। और कुछ सब कुछ छोड़ दीजिए, आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग में जो हम कर रहे हैं, बेसिकली वी आर हीलिंग द जेनेटिक कर्म। ये साइंस है, ये जो आप चेक कर कभी लीजिए। कोई लाइफ में हो चुका था उसको अपन अभी हील कर रहे हैं। भाई साहब बहुत पावरफुल चीज हो जाएगी। पिछले हफ्ते मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था, मैं उसको हील नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। होल्ड ऑन, आप इंक्वायर करिए, ठीक है, आप अपनी इंक्वायरी करिए, उसमें अपनी इंट्रोस्पेक्शन करिए। आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूं मैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन हैज रिटन अ बुक, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, where he says that our genes can be impacted by our beliefs. Yeah. Correct? ये साइंस है। So there is a scientific proof कि हमारे जो genes हैं, they can be impacted. You don't have to agree with me, you don't have to disagree with me. Just consider. It's a new viewpoint. Consider it. आपको अभी तक नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। तो जो चीज नहीं मालूम है वो गलत नहीं होती है। गलत नहीं कर रहा हूँ, आई एम विद यू। मैं सुन रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देन आई कुड नॉट कनेक्ट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। That's what I'm saying. और जब आप कहते हो कि किसी जन्म की उसको अपन संस्कार को आज अपन करेक्ट कर पाएंगे, तो इट इज टू मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे कर पाएंगे। कल के अपने हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह की कोई बात को कही को सॉरी बोल के अपन ठीक नहीं कर पाते हैं, और अगर कर पाते हैं तो इंटरनली कर पाते हैं, और कुछ नहीं है। मैं अगर अपने सुशील जी, होल्ड ऑन, आपका पॉइंट समझ लिया मैंने, आप मेरी बात तो समझिए। कोशिश तो कर रहा हूँ सर, सब छोटी कोशिश होती नहीं है। कर रहे हैं आप। अच्छा बताइए। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझिए ना, कि जेनेटिक कर्मा होता है। आप बोल रहे हैं कर्मा पिछले जन्म के कैसे ठीक करेंगे? पिछले जन्म का छोड़ दीजिए, आपके जीन्स जो हैं जेनेटिक कर्मा कंटेन करते हैं, उसकी हीलिंग की बात करें, वो आपके शरीर में अभी हैं, है ना। साइंस थोड़ा सा अगर आप समझते हैं तो जेनेटिक कर्मा समझते हैं, करेक्ट। उतना सोचिए, ज्यादा मत सोचिए, उसकी हीलिंग हो सकती है, ठीक है। यस संजीव, यू वांट टू शेयर समथिंग? ओके, गुड, राइट, लेट्स एक्नॉलेज सुशील जी, दैट इज फाइन. You don't have to agree with everything I say. Experiment for yourself, find out, inquire into yourself. Just because I don't know something, that doesn't mean that doesn't exist. मेरी knowledge में कुछ है, कुछ नहीं है. So if I can increase my knowledge and get the right understanding, that will be the right approach to life. Yes? All right, very good. So with this, we come to the end of the session. It's already 11 minutes over time. So I will stop the session now. Thank you very much. Enjoy your life. Enjoy a great life. And we meet again next week with more Gyan. Until then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Aham Brahmasmi. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. सभी को नमस्कार। Sir, thank you.